यूके आने के लिए आपको वीज़ा चाहिए, वीज़ा लेने के लिए आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए, स्पॉन्सरशिप लेने के लिए आपको जॉब ऑफ़र चाहिए और जॉब ऑफ़र लेने के लिए आपको इंटरव्यू चाहिए। और इंटरव्यू आपका होने के लिए आपकी सीवी सेलेक्ट होना बहुत ज़रूरी है और अगर आपकी सीवी अच्छी नहीं होगी तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। और अगर आप सीवी अप्लाई कर के जॉब पे थक चुके हैं, तो इसका मतलब है आपकी सीवी में बहुत ज़्यादा फ़ॉल्ट है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम है उस्मान और मैं आपके लिए इस चैनल पे इन्फॉर्मेटिव वीडियो यूके से रिलेटेड बनाता रहता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आप भी आने वाली हर वीडियो से बाखबर रहें। गाइस, इस वीडियो में आई एम गोना डिस्कस अबाउट अ सीवी रिज्यूमे, हाउ यू कैन मेक अ यूके फॉर्मेट सीवी एंड हाउ यू कैन गेट अ जॉब थ्रू योर सीवी बिकॉज सीवी इज द फर्स्ट impression for your recruiters. Okay, so if your CV is not a good, it's mean you are fail, you cannot get anything for UK. So guys, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें आपको अभी इसी वक्त अपने CV से रिमूव करनी है, which thing you have to remove from your CV, and कौन सी चीज़ें आपको अपने CV में ऐड करनी है, and which things do you have to add in your CV right now. So which format you should use for UK job, and which size should be for a CV. So all these things I'm going to discuss. This CV I'm going to discuss especially for healthcare, health professionals, and this format can use other professionals as well. So first of all, आपको ये 6 चीज़ें जो है अपनी CV से अभी इसी वक्त रिमूव करनी है. 6 things you have to remove from your CV right now. So the first thing is that you have to remove long paragraphs in your CV. There shouldn't be any long paragraph because recruiters haven't a time to read all and each and everything in your CV. Your CV should be very short. Your CV should be very attractive. Okay, so what you should use instead of long paragraph, you should use bullet point. You need to use every point shouldn't exceed 1 to 2 lines. So every point shouldn't be exceed 1 to 2 lines. So third one, you need to use keep it short. Your paragraph should be short. Okay, so this is the first thing you need to remove from your paragraph is that long paragraphs in your CV. And the second thing you need to remove from your CV is confusing acronyms. What is acronyms? Acronyms is like abbreviations. You shouldn't use abbreviation in your CV, and you shouldn't use buzzwords. Okay, so these are the not good guess for your CV. So third thing you have to remove from your CV is irrelevant work experience. You should use work experience but not unrelevant experience. You should use in your CV relevant experience, just relevant experience. Suppose you are applying for a assistant carer or a health carer, so you don't need to write it down the experience. If you have work in a KFC, if you have work in other factories or like that, if you been a driver, all these things, so you should use your relevant experience, not experience, just relevant experience. आप जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं. So fourth thing is full address. You have to remove your full address. Look, if you are applying in a UK and you have written your street number, your door number, your mohalla number, colony number, so recruiters don't need these things. If you are applying from a abroad, I mean, if you're applying from overseas like Pakistan, India, so you just need to write India, Pakistan, that's it. Okay, so this is the main thing. You don't need to write it down the full address. There's no need for anything. Okay, this is not going to work. So the fifth thing is outdated email. It is very important. Okay guys, if you have an outdated email, what is outdated email is that if you are using Hotmail, if you are using Yahoo Mail, these are the outdated email IDs. Okay, you need to use Gmail, you need to use Outlook IDs. Okay, so important thing is that this is the fifth point. You have to remove your outdated IDs. Sixth thing is hobbies and interests. Guys, most of the people's add in their CV is hobbies and interests. Recruiters don't interested in your hobbies and interests if they are not relevant in your if they are not relevant with your job that you're applying. Okay, so you need to write with relevant hobbies and interest. Okay, if you don't have, just don't write it. Okay, you don't need to write irrelevant interest and hobbies. Suppose you are applying as a skater, so and you have interest in playing music, so what, it's not going to work. So the next point is that what you need to add in your CV. So the first thing is that your CV format, because रिक्रूटर आपकी सीवी पढ़ने से पहले उसको देखता है. अगर उसका फर्स्ट इंप्रेशन देखने पे नहीं अच्छा पड़ा और उसको नहीं अच्छा लगा तो वो पढ़ेगा भी नहीं.
तो इसलिए योर CV फॉर्मेट शुड बी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सिंपल एंड अट्रैक्टिव. And in the end, I will show you as well how you can make a CV within 3 steps, how you can make a CV in 3 steps. I will show you. So your CV फॉर्मेट जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए. उसमें आपकी एक तो यह है कि आपने ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ करनी है, और उसमें आपने CV का वर्ड यूज़ करना है, ना कि रेज्यूमे. नॉट रेज्यूमे, जस्ट CV यूज़ करना है. और उसमें डेट एंड मंथ जो है वो इस ऑर्डर से होनी चाहिए कि पहले डेट आए देन मंथ. और उसमें कोई पिक्चर, कोई ग्राफ्स एंड कम्प्लेक्स सिंबल्स, डोंट यूज़ पिक्चर, ग्राफ्स एंड कम्प्लेक्स symbols. CV size is very matters, okay? So CV size should be short, okay? It's 1 to 2 page, not more than that. If you have a long experience, 3, 5, or 10 years, then you can use 3, 4 pages, okay? Because you have a long experience, you need to explain everything. So the third part is that I'm just telling you the कि आप किस फॉर्मेट से CV पे अपनी चीज़ें लिखेंगे. सबसे पहले आपने CV फॉर्मेट देखना है, उसके बाद आपने सबसे पहले आपका CV साइज़ आएगा, और उसके बाद सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल आती है CV के ऊपर. तो पर्सनल डिटेल में आपने डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखनी है अपना वीज़ा स्टेटस नहीं लिखना. अगर आप यहाँ पे UK में ऑलरेडी हैं, अपनी नेशनैलिटी लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको. देन आपका मैरिटल जो स्टेटस है, आप मैरिड है नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको. सो डोंट राइट डाउन दीज थिंग्स, ओके? You just need to write it down, your name, your address, your phone number, and your email, updated email, and don't use outdated emails. Okay, and your portfolio if you have anyone, or LinkedIn URL if you have any link of that. And don't use a photo, because when you will apply and you will put a photo on your CV, but if you will select it, your image will be changed, your face structure will be changed, like when you will be in the interview. So don't use your photo. So उसके बाद आपका आता है प्रोफाइल. आपकी प्रोफाइल इट्स मीन या समरी या प्रोफाइल, इन दोनों में से आप कोई चीज़ जो लिखते हैं, और उसमें आपने अपना सिर्फ बताना होता है अपना प्रोफेशन. कोई उसमें लंबी चौड़ी आपने फिर से वो नहीं बतानी कि मेरा नाम ये है, मैं वो हूँ, मैं वो ये. आपने जस्ट अपना प्रोफेशन बताना है, उसमें एजुकेशन बतानी है, उसमें क्वालिफिकेशन बतानी है, स्किल्स बतानी है, और अपना रेलिवेंट जो एक्सपीरियंस है वो आपने बताना है. दिस शुड बी वेरी शॉर्ट, दिस थिंग्स, बिकॉज इट्स अ समरी. यू नीड टू समराइज योर ऑल एक्सपीरियंस, ऑल दिस थिंग्स in very briefly, okay? And in this summary, you don't need to mention why I want this job, मुझे ये जॉब क्यों पसंद है और मैं ये क्यों करना चाहता हूँ, मैं आपकी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ. You don't need to write it down, okay? So the fifth thing is that education. You need to focus on this, because this matter in your education. In your CV. Okay, in this education section, you don't need to write down home country education order, okay? Because आप क्या करते हैं कि जब कोई इंटरनेशनली CV बनाता है और आपने UK में अप्लाई करना है, तो आप क्या लिखेंगे उसमें, एजुकेशन लिखेंगे, मैंने मैट्रिक लिखेंगे, और ये फॉर्मेट यूज़ नहीं करना. आपने मैट्रिक का वर्ड यूज़ नहीं करना. आप UK के मुताबिक आपकी मैट्रिक जो है UK में किस लेवल पे है, आपने वो लेवल मेंशन करना है. ठीक है, जो भी आपकी कंट्री में यूज़ होता है. UK FSC आपने की है, आपने मैट्रिक की है, तो वो आपने मैट्रिक या FSC नहीं लिखना, क्योंकि UK में ये वर्ड यूज़ नहीं होते. तो आपने UK के लिहाज से इक्विवेलेंट उसके हिसाब से वो जो वर्ड यहाँ पे यूज़ होते हैं वो आपने यूज़ करने हैं एजुकेशन में. सो द सिक्स्थ थिंग इज़ दैट वर्क एक्सपीरियंस. सो आपने जब वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करना है, तो आपका जो जॉब टाइटल है वो आपने UK के फॉर्मेट के हिसाब से लिखना है. सपोज अगर आप सीनियर केयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने ये देखना है कि UK में उस जॉब के लिए जॉब टाइटल क्या यूज़ होता है. आपने अपनी कंट्री के हिसाब से उसका जॉब टाइटल नहीं लिखना. ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है. इसके बाद मेन थिंग, आपकी CV जब आप सेव करते हैं या आप सेंड करते हैं, तो उसका फॉर्मेट जो है वो PDF फाइल में होना चाहिए. वो फाइल जो है वो PDF फाइल में होनी चाहिए. वो ईजी होती है हर किसी की एक्सेस में, ऑल्दो कि उनके पास हर वो फॉर्मेट होता है, लेकिन PDF फाइल जो है ये ज़्यादा मैटर करती है. और एंड पे जो लोग लिखते हैं कि रेफरेंस ऑन रिक्वेस्ट, डोंट राइट इट डाउन, बिकॉज इफ दे नीड अ रेफरेंस दे विल डेफिनेटली आस्क यू. सो यू डोंट नीड टू राइट इट डाउन रेफरेंस ऑन रिक्वेस्ट. So one more thing I just want to add it in is that you have experience, you have education, and you have a skills. It should be highlighted, okay? Your education, specific your education related to this job that you are applying, and your experience that you have related to this job, you need to highlight these things, because these are the keywords. You can say these are the keywords. So keywords should be highlighted. And the most thing is that when you will add your skills,
your skills should be according to the job description. When you will go to the job that you are applying, there will be a job description, and you need to read it down, the job description of the job application, and you will see there, you can see on the screen as well, and what they are asking, what they need, and which type of people they want. यूके में क्या होता है कि यहाँ पे एक सीवी जो है वो कंप्यूटराइज स्कैन होती है और वो कीवर्ड्स को सिर्फ स्कैन करती है। अगर आपके कीवर्ड्स होंगे तो वो उसको सेलेक्ट करेगी, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देगी। गोइंग टू शो यू द एग्जांपल, आप जॉब डिस्क्रिप्शन में कैसे कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। तो द रोल रिक्वायर्स गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एबिलिटी टू वर्क वेल इंडिपेंडेंटली और एज पार्ट ऑफ टीम विद द प्लेजेंट रिस्पेक्टफुल मैनर एंड अ डिज़ायर टू इन्हांस द लाइव्स ऑफ आवर क्लाइंट। सो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड टीम वर्क चाहिए। तो आपने उस क्वालिटी और स्किल्स के हिसाब से अपनी सीवी में अपनी क्वालिटीज़ और स्किल जो है वो ऐड करनी है। Now I'm going to show you the live demo how you can make a CV within 3 steps in easy steps. Before moving further, if you didn't subscribe my channel, please subscribe this channel so you can get more videos related to all these things. Thank you. यहाँ पे लिखेंगे My Perfect CV। जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हैं सर्च के लिए, तो आपके सामने कुछ पहला पेज इस तरह का आएगा। आपने पहले लिंक को क्लिक करना है तो आपके सामने ये पेज जो है वो खुलेगा। यहाँ पे आपने क्रिएट योर सीवी पे सेलेक्ट करना है और आपके सामने ये पेज आता है। यहाँ पे आपने क्रिएट माय सीवी पे देन अगेन क्लिक करना है और आपके लिए आपका फॉर्मेट है, आपने कौन सा फॉर्मेट जो है वो यूज़ करना है। यहाँ पे आपको कलर की ऑप्शन मिलती है, आपने कलर कौन से यूज़ करने हैं। सो माय सजेशन इज़ यू नीड टू यूज़ नॉट मोर ब्राइट कलर्स, use a simple colors so it look like a formal. So you can use any format, any CV format, because they all are UK format CVs, so you can choose anyone. So I will choose just this one. तो जैसे आप फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन आती हैं कि क्रिएट न्यू सीवी, आई ऑलरेडी हैव अ सीवी। तो अगर आपके पास मोबाइल में कंप्यूटर में ऑलरेडी सीवी पड़ी है तो आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ करनी है, आई ऑलरेडी हैव सीवी। तो आई थिंक सो एवरीवन हैव अ सीवी ऑलरेडी। सो इससे क्या होगा, आपकी टाइम की बचत हो जाएगी। आपने ये सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, देन आपने अपलोड माय सीवी पे जाके इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सीवी अपलोड हो चुकी है और उसके बाद आप नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे प्रोसेसिंग सिलेक्शन होती है, एनालाइन करता है, ये सॉरी अप्लाइन करता है, फिनिश हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि आपने इसमें एडिटिंग करनी है। बेसिकली आपकी जो सीवी पुरानी सीवी है उसको ही अपलोड करता है ये, और उसके बाद आप इसमें एडिटिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। सेम वही जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वही आपने करना है। उसके बाद आपकी वर्क हिस्ट्री आती है और यहाँ पे आप वर्क हिस्ट्री को सिलेक्ट करते हैं। सो वर्क हिस्ट्री में आप कोई चीज़ आपने ऐड करनी है तो आप उसको कर सकते हैं। मेरी ऑलरेडी बनी हुई है तो ये इसमें भी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको ये देख सकते हैं। तो ये ऑलरेडी मेरा एक्सपीरियंस है। आपकी you can see that very simple and short sentences, not too long. So और आपकी ऑर्डर जो है वो वर्क हिस्ट्री का जो आपका मोस्ट रीसेंट है वो आपका सबसे ऊपर होना चाहिए। उसके बाद आपका जो है वो नीचे नीचे ऐसे नीचे होना चाहिए, पुराने वाला नीचे होना चाहिए और मोस्ट रीसेंट जो है वो आपका एजुकेशन वाला सेक्शन जो आता है उसमें भी आपने सेम उसी तरह एजुकेशन में जाके आपने इसको एडिट कर लेना है। ओके जैसे आप वर्क एक्सपीरियंस पे आएंगे तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करना है, एडिट करना है और ये सारा अपना जो भी आपका जॉब टाइटल है, एम्प्लॉयर जो भी था आपका, और ये सारा आपने यहाँ पे जब लिखेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे मेन चीज़ है आपके पास ये ऑलरेडी चीज़ें मेंशन कर देता है कि आपके प्रोफेशन के हिसाब से जब आप यहाँ पे लिखेंगे ना आपने किस प्रोफेशन के लिए सर्च करना है तो आप यहाँ पे अपना प्रोफेशन लिखेंगे। सपोज़ केरर लिखते हैं आप तो ओके यहाँ पे हमने केरल लिख दिया और आपको ये नीचे जो ऑप्शन नज़र आ रही हैं ये आपको केरल के हिसाब से बताएगा कि आप क्या क्या अपनी सीवी में ऐड कर सकते हैं। और जो चीज़ें आपको सूट करती हैं, जो चीज़ें आपको लगता है कि आपके पास ये सारी क्वालिटीज़ और सारी आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप ये अपनी सीवी में प्लस कर करके ऐड करते जाएंगे। तो ये आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ज़्यादा एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने जस्ट यहाँ से प्लस करते जाना। और ये सारे सेगमेंट्स में ऐसे ही होगा, एजुकेशन में, वर्क में, स्किल्स में, प्रोफेशन में। आपको स्किल भी बताएगा कि केरल की स्किल क्या होनी चाहिए, क्या हो सकती हैं। प्रोफेशनल समरी भी बताएगा कि आपको प्रोफेशनल समरी कौन सी लिखनी चाहिए, उसमें से कोई भी एक ऑप्शन आप इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। देन आपकी प्रोफेशनल समरी आ जाएगी, स्किल्स आ जाएगी, ये समराइज़ हो जाएगी। फाइनलाइज होने के बाद आपको ये ऑप्शन बताएगा कि आपने इसको ईमेल पे सेंड करना है अपनी या कहाँ पे करना है, तो आप इसको सेव कर सकते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद मेरी कुछ सीवी इस तरह की बनी है, आप देख सकते हैं और आप भी बना सकते हैं। Thank you so much guys. I hope you would like this video, you would like this CV pattern and all these things, and thank you so much for watching this video. See you in the next video. Please